Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you? You're okay? I believe you understand what I have recorded in my previous videos. Everything is clear. Now I am talking to my very simple, very basic viewers and audience who do not understand English, who want to learn, practice and improve their language. So I'll be talking bilingually in two languages. Bilingual means two languages. Monolingual, one language. So I'll be talking in two languages, English and Urdu in this video. I might use a few words from regional language. You shouldn't be worried and upset about them. The people from different regions from Pakistan and India do understand and do want me to talk because they have expressed in their comments that I should be speaking Punjabi or Saraiki, other languages that I can. What I can, I should. So anyway, let's go with the first lesson today. First lesson in the term, in the sense, let's start speaking some English. You have watched different videos. I had taken you out in Saudi in shop and on the road as well to show you how the life is like in 24-hour curfew. Anyway, now today this video is basically we are starting speaking English. When we want to start speaking English, we have to see what is the first thing that we can start talking with. How can we start speaking English? तो पाकिस्तानी और इंडियन बैकग्राउंड वाले लोगों से अब मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ. तो सभी मतलब इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि इंग्लिश कब शुरू होगी. अब हमें सैर शहर करवाते हैं, गप्पे लगाते रहते हैं, लेकिन इंग्लिश नहीं शुरू कर रहे. तो आज इस वीडियो में चले हम इंग्लिश थोड़ी सी शुरू करते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इंग्लिश जब बोलना स्टार्ट करें तो पहला स्टेप क्या है, कहाँ से बात शुरू करें, हमारी प्रैक्टिस कैसे होगी. अब ये वीडियो ख़ास तौर पे मैं उन ऑडियंस को जहन में रख कर बना रहा हूँ, उन व्यूअर्स को जो बहुत कमज़ोर बैकग्राउंड से हैं, उन्हें इंग्लिश नहीं आती या थोड़ी सी लफ्ज़ उनको पता है, कोई मैट्रिक 9-10 तक के जो लेवल के मतलब क्वालिफ़िकेशंस हैं जिनकी, उनको जहन में रख कर ये वाली वीडियो बनाई है मैंने फ़िलहाल. तो वो ज़्यादा इंजॉय करेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, ज़्यादा लर्न कर लेंगे. और या वो तमाम व्यूअर्स, वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि यार मुझे इंग्लिश तो आती नहीं, मैं कैसे बोलूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे प्रैक्टिस करूँ, कोई मुझे मेरी हेल्प करे, कोई मुझे गाइड करे, मुझे स्टार्ट करवा दे एक दफ़ा, तो बस फिर मैं आगे चलता जाऊँगा. तो पहली बात, जब लैंग्वेज स्टार्ट होगी, ये सिर्फ इंग्लिश नहीं है, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज जब आप बोलना शुरू करेंगे, आप अगर फ़र्ज़ करें आपने जर्मन लैंग्वेज सीखनी शुरू की है, तो भी आपका यही लेसन जो अभी आज हम कर रहे हैं, ये इसी तरह से आप स्टार्ट लेंगे जर्मन लैंग्वेज का भी. और कोई भी स्पेनिश है, इटालियन है, नॉर्वेजियन है, इवन पाकिस्तान उर्दू बोलने वाले अगर पश्तो सीख रहे हैं, पश्तो में वो इसी तरह से कर रहे हैं, और पश्तो वाले अगर उर्दू सीख रहे हैं तो वो भी मतलब है, कोई भी नई ज़ुबान जब सीखें और उसको प्रैक्टिस करना चाहें, बोलने की प्रैक्टिस, महारत हासिल करना चाहें, फ्लुएंसी पैदा करना चाहें, हेजिटेशन ख़त्म करना चाहें, कॉन्फिडेंस चाहें, तो ये वाला काम सबसे पहले शुरू कर लें, जो आज मैं एक्टिविटी आपसे मतलब है आपके साथ मिलके करूँगा. इस एक्टिविटी को पूरा वॉच करना है, आखिर तक देखना है, इसके नोट्स भी बनाने हैं, और जिस तरह मैं करूँगा इसी तरह आपने वो करके घर में देखना है, और फिर रिजल्ट्स आपने मुझे बताने हैं. 3 दिन ये वाली दवाई खानी है, ये कैप्सूल है, बड़ा अच्छा बनाया हुआ है मैंने, ये आपने खाना है. 3 दिन के बाद इंग्लिश ना आई ना ये वाली,
तो बस फिर आप मुझ पे जो जुर्माना लगा रहे हो लगा देना, लेकिन ये काम 3 दिन करना है। हर रोज़ 15-20 मिनट आपने घर में ही, अपने घर में के अंदर इस तरह से ये एक एक्टिविटी करनी है। तो आपको ये वाली चीज़ की जो है ना, ये वाली इंग्लिश जो मैं करवाऊंगा, ये वाली तो आपकी ज़ुबान पे बेहतरीन हो जाएगा, उसका स्टार्ट, उसका कहना, उसका फ्लो बन जाएगा। और ये वाले इसी तरह चीज़ें कड़ियाँ जुड़ती जाएंगी। लैंग्वेज कोई ऐसी चीज़ नहीं कि ये वाली चीज़ इंग्लिश है। इंग्लिश असल में ये ऐसे उंगलियों की तरह है। इंग्लिश की एक चीज़ सीखेंगे और फिर दूसरी चीज़, ये अलग अलग नहीं रहेंगी। एक वक्त आएगा पहले हम एक एक करके सीखेंगे, ये एक इंग्लिश है, फलां किस्म की बातें, फलां किस्म की चीज़ें, फिर ये कर लेंगे, इसकी अच्छी प्रैक्टिस, समझ आ जाएगा अच्छी तरह से, ये फ्लो भी बन जाएगा सारी। फिर दूसरी चीज़, जब इसका भी प्रैक्टिस कर लेंगे, इसका भी फ्लो बन जाएगा, तो फिर ये दोनों मिला देंगे, मिलकर इसकी फिर फ्लो बनाएंगे मिली हुई। फिर तीसरी चीज़ है, उसको सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, वो ये होता है चीज़ को समझना, अंडरस्टैंड। You will try to understand what is this. तो अंडरस्टैंड करने के लिए मैं उर्दू में या किसी भी तरीके से, पंजाबी, सराइकी, जो मुझे बोलना पड़े, जो मुझे आता होगा, कि आपको जहन में रख के, मैं देख रहा हूँ उधर मलक साहब भी बैठे हैं, बस साहब भी बैठे हुए हैं, वो खान साहब भी, मतलब वो देख रहे हैं कि भाई अब कैसे होगी ये इंग्लिश में। तो सब मेरे दिमाग, मुझे नज़र आ रहा है, सब बैठे हुए हैं इधर और कह रहे हैं ये इंग्लिश अब कैसे मैं बोलूँ। तो अब ये है कि ये वाली मुख्तलिफ बातें, ये समझ लें बातें हैं। पूरी इंग्लिश में हमको टेंसेस नहीं पढ़ने लगे कि वो ग्रामर के जो आप स्कूल में टीचर ने पढ़ाए थे, टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जो मेरा एक प्रोग्राम है उसके अंदर वो जादू से आ जाएंगे, वो पता भी नहीं लगेगा, वो इंजेक्शन ऐसे लग जाएगा। असल चीज़ जो आपने सीखनी और समझनी है वो पूरी लैंग्वेज सेंसेस पर है, कि सेंस से मुराद है आपके मफहूम क्या है, ज़हन में क्या कहना चाहते हैं, बातें समझ लें। चले आम सादा अल्फाज में यूँ समझ लें बातें। इंग्लिश में मुख्तलिफ किस्म की बातें, कितनी किस्म हो सकती बातों की, आपको पता है? कभी आपने सोचा लैंग्वेज में बातों की कितनी किस्में बन सकती हैं? मैंने 20 साल से ज़्यादा इंग्लिश पढ़ाई है और जितनी टोटल हमने रिसर्च करके सामने आई हैं वो तकरीबन 110-115 बातें बनती हैं। टेंसेस तो 12 आप पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस और फलां, पास्ट टेंस और फ्यूचर और कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट वगैरह, वो 12 अमूमन पढ़ाए जाते हैं या टीचर इंग्लिश के मतलब स्कूल में पढ़ा देते हैं। उस टेंसेस आने से इंग्लिश तो नहीं बोल सकते आप। पूरी लैंग्वेज में गप शप करने के लिए अब वो 112 या 115 के करीब बातें बनती हैं पूरी लैंग्वेज में। किसी भी लैंग्वेज 112-15 बातें बनेंगी टोटल। वो सारी बातें आप सोचने लगे हुए फिर इंग्लिश यार मैं नहीं सीखता, बड़ी मुश्किल है, ये कैसे मुझे याद होगी, मेरा तो दिमाग कमज़ोर है। तो भाई फिक्र ना करें, टेंशन नहीं लेनी। कमज़ोर कोई बादाम, अखरोट, पिस्ते थोड़े से ले लें, खाएं पिए हैं, मक्खन खाएं, कुछ चीज़ें खाएं पिए, इंशाल्लाह दिमाग काम करेगा, बेहतरीन। घबराना नहीं है। 110-12 सारी नहीं आपने याद करनी, सारी बोलनी भी नहीं पड़ती, लेकिन बातें हैं, वो मौजूद हैं, वो उनका वजूद है सही, हम वो सब देख लेंगे। लेकिन आपने करना क्या है, आप उसमें से जो ज़्यादातर है ना, वो 24 से 30 के करीब बातें हैं इंग्लिश में जो बार बार लाइफ में बोलनी पड़ती है। आप सुबह से शाम तक इंग्लिश बोलते रहे, हर शख्स से, हर जगह, हर तरह की गपशप माहौल में जाएं, बातें करते रहे सारा दिन, आपको 20-25 बातें ही बार बार घूम फिर के वही कहनी पड़ती। तो उनमें महारत आ जाए वो 20-25 में, बाकी की आपको इल्म आ जाए, समझ आ जाए, पता लग जाए, आप थोड़ी सी अगर वो चाहें उनकी प्रैक्टिस कर लें। कुछ उनमें से ऐसी बातें जो सिर्फ किताबों में ही हैं, बोल चाल में ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ बातें ऐसी हैं जो बस फॉर्मल सी हैं, रस्मी सी ज़ुबान के लिए ज़रूरत पड़ती, गैर रस्मी गुफ्तगू में उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो बात तो है, वो बातें तो हैं, वो लाखों किस्म की, वो एक फार्मूला, एक बात तो बनती है वो। तो इसलिए वो आप रिलैक्स रहें, बड़ी आसान है इंग्लिश, और मैं आपको लेकर जाऊंगा अच्छे अंदाज से, स्मूथ तरीके से आगे। तो लिहाजा आज चले टाइम हम बचाते हैं अपना पहला लेसन जिससे हमने प्रैक्टिस करनी है, जो आप बोलेंगे। सबसे पहले मैं आपको वो 4 लफ्ज़ों से बात शुरू कराऊंगा प्रैक्टिस।
जब मैं आपको समझा लूँगा ना, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं उर्दू में नहीं आपसे बात करूँगा, घबराना नहीं, टेंशन नहीं, आपको समझ आएगी इंग्लिश। आसान बोलूँगा, ज़रा इजी करके बोलूँगा, लेकिन आपने गौर करना है, कोशिश करनी है, आप समझे मेरी बातों को। मैं क्या बातें करूँगा, कैसे करूँगा, वो आप देखेंगे प्रैक्टिकल में। और थ्योरी ये है, थ्योरी जो है ना, मैं वो जो समझाता हूँ वो मैं उर्दू में आपको चलो समझा देता हूँ, थोड़ी सी बीच में इंग्लिश बोल दूंगा, अगर किसी को उर्दू नहीं आती तो वो इंग्लिश में उस बात को समझ सकता है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड Urdu or Punjabi or Saraiki, other languages, don't worry, just stay with me, be patient, I'll explain to you in English language. But watch this video throughout the lesson activity. I'll talk. Today is the first lesson. Practically, we want to start speaking English. And the first thing, it's not just English, any language of the world you want to learn, that is the first lesson. Practically, you start talking from this lesson. And then you go on to the next topic and other topics. So this is the first topic today that you want to practically start, speaking and start practice of a foreign language, new language that you want to learn. तो अब ये है कि क्या हमने करना है, तो हमने 4 लफ्ज़ बोलने हैं आज। वो 4 लफ्ज़ और चंद चीज़ें। अब चीज़ों की जो है ना इंग्लिश, वो तो अक्सर कोई 7वीं 8वीं का स्टूडेंट हो ना, गवर्नमेंट स्कूल का, पाकिस्तान इंडिया के, मतलब कोई आम से स्कूल का, कोई किसी भी कमज़ोर से स्कूल का, अगर वो तालिब इल्म है 7th 8th तक इंग्लिश उसने कुछ स्कूल में पढ़ी है, तो उसको उसकी वोकेबलरी में कोई 100 200 300 लफ्ज़ तो ज़रूर ही होंगे, उनकी इंग्लिश उसे आती होती है, उसे पता नहीं होता, उसको वो समझता है शायद इंग्लिश तो मुझे कुछ भी नहीं आती। वो लफ्ज़ तो आते होते हैं, चाहे वो जितना मर्जी कमज़ोर हो। वो लफ्ज़ जो हैं हमारे इस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले, उन लोगों को ये लफ्ज़ आते होते हैं, क्योंकि बहुत से उर्दू के और हिंदी के लफ्ज़ ऐसे हैं जो कि इंग्लिश में भी वही हैं। मसलन ग्लास इंग्लिश का भी है और उर्दू में भी हम ग्लास कह देते हैं, इंडिया में भी ग्लास कह देते हैं, ठीक है ना। और कुछ ऐसे इस तरह के लफ्ज़ हैं जिनकी वो इंग्लिश भी वही है, उर्दू में भी वही है। कप है, कप इंग्लिश में भी कप, प्लेट, कप, ग्लास, ये उर्दू में भी ये कहते हैं। सराइकी बोलेंगे फिर भी बादशाह गिलास तड़े हो, गिलास तड़े हो, अब वो सराइकी में भी ऐसे कह देगा। तो लिहाजा ये कोई वो लफ्ज़ 100 200 लफ्ज़ चीज़ों की वो आपको आने चाहिए। अब ये है कि आप अगर बहुत ही कमज़ोर महसूस करते हैं ना अपने आप को, कोई भी नहीं पता, right? If you don't know nothing, any words, you should start thinking and asking and learning, from people, what what are these words, what are these things in English language, how do we say these things in English? That's the first thing. You should have a knowledge, vocabulary of different nouns, different things. चीज़ों के नाम हमें आने चाहिए, मुख्तलिफ अशिया का पता हो, जो हमारी चीज़ें हैं, जैसे ये मैंने शर्ट, ये ग्लासेस, ये हैट, ये मार्कर्स, ये चीज़ें जो हैं, कौन सी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी इंग्लिश हमें आती है। यहाँ से पहली बात शुरू करेंगे। जो मुख्तलिफ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, कुछ चीज़ें आप इकट्ठी कर लें। कुछ घर में ना एक बॉक्स में एक जगह चीज़ें ज़रा उठा के इकट्ठी करें, कुछ पेन, कुछ किताबें, कुछ किचन में से कुछ मसाले ले लें, कोई जितनी भी आप 30-40 चीज़ें इकट्ठी करें एक जगह पे। जब आप वो चीज़ें इकट्ठी कर लें, बगैर टेंशन के मतलब वो चीज़ें उठा के इकट्ठी कर लें, फिर वापस कर लेना प्रैक्टिस के बाद। 3 दिन आपने ये दवाई खानी है, मेडिसिन आपको दे रहा हूँ। वो 30-40 जितनी भी चीज़ें आपको मिले एक बॉक्स बना लें, उसमें इकट्ठी करें और करके वो घर की चीज़ें उठाकर वो एक कमरे में चले जाएं। उस कमरे में जाके वो चीज़ें रखें और वो चीज़ें रख कर कुछ चीज़ें करीब रखनी है, कुछ दूर रखनी है। Right, something you will put, take about 30-40 different things from your house
The things that you use in your life, in your daily life, they are available in your house. You don't have to bring from outside. You know, just go to the kitchen, go to bedroom, go to washroom, bring a few things and put them in a box, and then collect them. And then when you want to practice English for 3 days, you have to speak English with the help of this. This is an activity that you have to do. This is the first activity to start speaking a foreign language, to start practice foreign language. All right, so now after that, what you're gonna do, then I tell you how you will speak, how will you talk. You have to use 4 different words in this activity and those things. These 4 words, one word is this, second that, and third is these, and fourth is those. These 4 words is the first activity that you have to practice speaking English. And when you are speaking English, don't speak your language, don't think in your language, don't translate, don't even try to translate. Think in English, look the things in English. Don't worry about your language. Forget it for some time. During the practice time, don't think, don't translate, nothing. ठीक है जी, आपने तर्जुमे नहीं करने, आपके ज़हन में जो बातें हों वो उसको इंग्लिश में ही सोचें, वो इंग्लिश में ही देखें. मसलन ये आप देख रहे हैं, इसको इंग्लिश में ही देखें. ये क्या है, ये आपके ज़हन में पहले ये आना चाहिए, ये कलम है, फिर इस कलम को मार्कर कहेंगे, या इस तरह का कोई तर्जुमा करें. तो आप उसको पहले ये क्या है आपको नज़र आ रहा है, ये जी शर्ट, तो आप पहले इसको देखें, कमीज, फिर शर्ट, ऐसे तर्जुमे बनाएं दिमाग के अंदर. ऐसे ना होने दें. जस्ट शर्ट लफ्ज़ी इंग्लिश का एक चीज़ भी. तो आपके ज़हन में जो कनेक्शन बनना चाहिए वो तस्वीर और इंग्लिश का लफ्ज़ होना चाहिए. दरमियान में उर्दू का जोड़ नहीं लगना चाहिए. वो जो जोड़ लगाते हैं ना उससे एल्फी से, वो वाला जोड़ जो है वो उर्दू या पंजाबी का नहीं लगना. मुझे चीज़ें और इंग्लिश, pictures and language, just the words. There's nothing between. You're not thinking in your language. Just speak in English when you look at things. If you don't know how to say that thing in English, don't worry, ask your friend, ask your uncle. You have technology, you have WhatsApp, you have other sources. Just phone, just message, say, hello, excuse me, can you tell me what do we say this thing in English or that thing in English? What do you say? How do you say? Can you help me? Your uncle, your friend, your relatives will help you. They will tell you what do we say, how do we say these things in English. Right, so that is the way you can start learning, start speaking on your own without special, degrees, courses, institutions, colleges, universities, books, so many things. You don't need. It's very easy, very simple, ordinary. Just stay home, stay safe. Don't go outside, Corona is there. Stay at home, practice some English that way. That's the easiest way, I'm gonna tell you. Trust me, you will be able to talk very easily, fluently, without hesitation, with confidence, inshallah. So let's start our lesson now. The 4 words, I wanna tell you these 4 words. Now, this and that. So this and that, with this we will say this is. If you are writing English, you can also write this word, this, like this, and this small comma and S, this is called apostrophe. Apostrophe S, this is, and then whatever. If it is one, of course it's one thing, you say this is a pen. This is, don't have to say this is a pen. Don't break, try to connect. So this is a pen. Right? Similarly, that's
you can write that is, and you can say, let me use the black one, you might be able to see it better. That's, you can write this way, apostrophe S. That's a book. Right, so this is and that is, and these are for more things, 2, 3, 4, more, not one. This is for one, near, very close to you, near you, something, say this is, and a little bit far away, say that is, for one thing, that's. When you say, try to say that's, don't say that is a book, right? If you want to be fluent in English, you will join them, contract them. This is called contraction, yeah, joining together. These are for more things, so you can write also this way. These are, so this apostrophe, this is the comma, like a comma. These are, comma is actually below, down. Anyway, these are, so when you try to speak them like one word, say, these are. So like one word become these are. And for more things, those are. So you can also write short forms, full forms, and short forms. These are full forms, these are short forms. अच्छा भाई, अब मैं आपको उर्दू और पंजाबी में समझा देता हूँ, क्योंकि आप कमज़ोर से हैं मेरे जहन में कि इंग्लिश नहीं आती, कहाँ से शुरू करेंगे, कैसे बोलेंगे। तो आपकी एक चीज़ जो होगी ना करीब, उसको आप कह देंगे this is, yeah, this is बजाय लंबा खींचने के यूँ प्रैक्टिस में ज़्यादा बोलें। this is a pen, ऐसे this is करके बोलें। this is a marker, this is a plate, तो this is ऐसे एक चीज़ होगी ना जब हमारे करीब कोई भी चीज़, और थोड़ी सी दूर होगी तो हम कह देंगे that's, पूरा लफ्ज़ है that is, ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम में ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। दोनों तरीकों से बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन that is ज़्यादा अच्छा बोलचाल में दुनिया में ये तरीका। अगर आप चाहते हैं मैं रवानी से इंग्लिश बोलूँ तो ये वाला स्टाइल की प्रैक्टिस करें शुरू से ही, पहले लेसन से ही ऐसे बोलना शुरू करते हैं। That's a book, बजाय that is a book ऐसे खींचने के लंबा फुल फॉर्म वाले, शॉर्ट फॉर्म वाले बोले। और these are ज़्यादा चीज़ें हो ना करीब, एक से ज़्यादा, 2, 3, 10, 20 जितनी मर्जी करीब पड़ी हो, आपको फासला कम लगे तो आप कह सकते हैं तो these are फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म क्या बेहतर है बोलना, ये फुल फॉर्म के शॉर्ट, बोल चाल में ये ज़्यादा बेहतर है। एग्ज़ाम में आपकी मर्जी, यूँ लिख दें, कोई टेस्ट है इंग्लिश का तो these are, तो वो जितना एक लफ्ज़ की शक्ल बन जाए बोलते हो तो ज़्यादा अच्छा है। these are books, these are my friends, these are things, these are good, तो those are, तो those are तो like एक लफ्ज़ की आवाज़ बन जाएगी बजाय दो लफ्ज़ों के। Those are books, those are things, those are spoons, those are carpets, तो those are ये 4 words हैं। अब इसमें हम डिटेल में जाना नहीं चाह रहे कि मैं कोई ग्रामर पे ख़ास आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ कि दिस इट का फ़र्क बता दें, ये कर दें। वैसे वो दोनों मतलब है, ये होता है कि बेजान चीज़ के लिए कह देते हैं कि इट यूज़ कर लें और दिस, ये किताबों में लिखा हुआ, लेकिन बोलचाल में गपशप में आप ये जहन में रखें कि दिस आप चीज़ों के लिए कह सकते हैं। आप मतलब दिस इज़ अ डोर, दिस इज़ अ विंडो। अगर आप इट भी कह देंगे बोलचाल में तो कोई आपको कोई नाराज़ नहीं होगा, मारेगा भी नहीं। इट इज़ अ डोर, इट इज़ अ बुक, एंड इट्स अ विंडो। लेकिन दिस इज, जब इन 4 लफ्ज़ों को कहते हैं, इनका नाम है ग्रामर में डिमॉन्स्ट्रेटिव
pronouns. Demonstrative pronouns. This, that, these, those. तो ये प्रैक्टिस में पहला लेसन बातचीत गपशप करने के लिए 4 लफ्ज़ों को हम बोलना शुरू कर देते हैं और इनसे हम मुख्तलिफ चीज़ों को बयान करेंगे। एक चीज़ हो तो हम ये एक पेन है तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? This is a pen, this is a pen, it's a pen भी कह सकते हैं, it's a pen, this is a pen। demonstrative pronoun एक नाम है, अगर आप नाम भूल भी गए तो कोई बात नहीं, ग्रामर के तौर पे नेम ज़हन में रखें। 4 का नाम है demonstrative pronouns। This is a pen and ये एक पेन है, ये एक है, ठीक है। और अगर आपने ईट भी कह दिया ये भी चल जाएगा। तो अगर थोड़ा फासले पे हो, आपको लगे जब दूर कहना है तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन भी बॉडी का दूर का बना लेना बोलते हुए, वो नेचुरल स्टाइल लगेगा। That's a pen, थोड़ा सा बॉडी पीछे चलेगी। That's a pen and this is a book। That's a pen, that's a pen, ऐसे करके आपने मिलाकर बोलना है थोड़ा सा। पहले आप थोड़े से स्लो होंगे, फिर दूसरे दिन आप कुछ कोशिश करनी है कल वाली स्पीड से ज़रा जल्दी बोलना है। पहले दिन शायद आप ऐसे बोलेंगे this is a pen, this is a pen, this is a plate, this is a marker, this is a phone, ये स्पीड होगी। दूसरे दिन सुजुकी कार नहीं चलानी, दूसरे दिन ज़रा गाड़ी और ले आए, स्पीड मारें, उसकी गियर लगाएं, दूसरा दिन आ गया, फिर आप प्रैक्टिस में फिर कैसे बोलना है, फिर this is a pen, this is a book, this is a plate, and this is a marker, and this is a glass। फिर ये स्पीड होगी। आपने बोला दूसरे दिन, अब आपका तीसरा दिन आ गया, थर्ड डे आ गया, अब आप थोड़ा सा लगा दें, ज़रा फरारी चलाएं, GMCW, कोई मतलब इस तरह की कोई भी और मॉडल गाड़ी का आप नया आ गया, तेज़ स्पीड के साथ चलेगी मामला, तो आप इस पे पिजारो लैंड क्रूज़र पे बैठ गए, अब आप चलाएं इसको फटाफट, तेज, बेहतरीन। तीसरा दिन प्रैक्टिस की आपने, कल भी की, परसों भी की, तो तीसरे दिन फिर कैसे ज़रा स्पीड थोड़ी सी आगे करनी है आपने। This is a pen and this is a book and it's a glass and this is a table and this is a जो भी आपके मुंह से निकल सके फ्लो आप बोलें। बोल चाल पे हमारा फोकस है, ग्रामर हमारा बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं है इन लेसन्स में। ग्रामर एक अलग से कोई वीडियोस क्लास, कोई उसके लेसन्स बनाएंगे, वो उस पर बात करेंगे। इस पर उन लोगों की मदद हो रही है, उन व्यूअर्स की, उन ऑडियंस की जो चाहते हैं मैं इंग्लिश आराम से बातचीत कर सकूँ, उन्हें बहुत ज़्यादा ग्रामर की उलझने और रूल्स में नहीं फंसाने की ज़रूरत। उन्हें गपशप का माहौल दिया जाए, गपशप करें, स्टार्ट इंग्लिश बोलने, भाई आ जाओ गपशप करें। तो ये है 4 लफ्ज़ों से हम इंग्लिश में बातें करेंगे। एक चीज़ करीब होगी तो दिस इज, एक चीज़ दूर होगी तो दैट इज, दैट्स, और चंद चीज़ें करीब लगेंगी तो दीज आर, और दूर थोड़ी सी होगी तो दोज आर। अब उर्दू में मैंने आपको समझा दिया, तो भट्ट साहब, शेख साहब, खान साहब, चौधरी साहब सारी गल समझ आ गई। हुन असी नाम गप्पा लावांगे, थोड़ी जी अंग्रेज़ी बोलनी है, ठीक है ना, उर्दू नहीं, हुन कोई होर जुबान नहीं, हुन समझो बस इंग्लिश है। तो मैं प्रैक्टिकल करके तुम दिखाना चीज़ा रख के कि किवें गपशप करनी है, किवें बोलना है, तो ताकि वो तुम जिहड़ी गल समझ आ जाए। ये वीडियो दे नाल हुन तुसी अगली वीडियो देखो, ये नाल ही प्रैक्टिकली किवें गपशप करनी है, तो वो फिर तुम सारा समझ आ जाएगी गल। ठीक है, चलो जी देखते हैं हम कि अगे किवें प्रैक्टिस करनी है। हुन उर्दू पंजाबी ख़त्म फिलहाल इस लेसन प्रैक्टिस करने वास्ते। Right, so now we'll talk and practice these 4 words: this, that, these, those. I'm sorry, you have to be patient in this video because sometimes I'm speaking in English, sometimes not in English, other languages. You might get confused, embarrassed, you don't want to watch throughout, but please stay in touch. Bear with me, be patient, you will learn definitely. I'll help you, I'll show you practically how can you talk in English fluently. You will gain confidence, your hesitation will go away, right? Let's practice. Now in the practice, I'm not speaking other languages,
I'll be just speaking only English. That's a good time for you. You should be happy now because no other language, just English now, but slowly maybe. And the same way you will practice at your home with these things as the example I'll show you, right? Thank you. Stay in touch and stay with me, right? Let's start practice. जी अच्छा, इससे पहले कि हम प्रैक्टिस स्टार्ट करें मैं आपको एक ज़रूरी बात भी शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि फिर उर्दू और दूसरी ज़ुबान नहीं हमने बोलनी प्रैक्टिस के दौरान आपके जहन में हो इस एक्टिविटी के क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या आपको रिजल्ट्स सामने आएंगे। एक तो ये है कि उन लोगों को जिन्होंने इंग्लिश नहीं बोली और बोलना चाहते हैं, कभी पहले कभी लैंग्वेज लाइफ में नहीं बोली इंग्लिश, अब वो चाहते हैं हाँ हम बोलना चाहते हैं, हम आ जाए इंग्लिश, हमारी स्पीड भी बन जाए, कॉन्फिडेंस भी, हेजिटेशन ख़त्म हो जाए, तो वो क्या करेंगे इस एक्टिविटी का उनको फ़ायदा जो रिजल्ट आएंगे ना, वो ये 20 साल से ज़्यादा का तजर्बा है मेरा, जिन लोगों ने ये एक्टिविटी की उन्होंने ये कहा और एक्सप्रेस किया और रिजल्ट सामने मैंने देखे कि उनका ज़ुबान का फ्लो बन गया। शुरू में ही बात करते हुए इस ज़ुबान ने कभी इंग्लिश नहीं बोली, तो जब कभी इंग्लिश बोली नहीं तो ज़ुबान फिर क्या हो गया, वो रुकी हुई, उसने कभी इंग्लिश बोली नहीं, उसे पता ही नहीं इंग्लिश बोल के क्या होता है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलेंगे, ज़ुबान से ज़रा स्टार्ट लेंगे, बोलना शुरू करेंगे, ये ऐसी एक्टिविटी आसान है और समझ भी आती, बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता, तर्जमे भी नहीं करने पड़ते, बस जो देखी जाओ बोली जाओ, देखी जाओ बोली जाओ और उससे फ्लो बनता जाएगा। तो इस एक्टिविटी में आपके रिजल्ट्स ये होगा कि आपकी ज़ुबान का फ्लो बन जाएगा, खुल जाएगी। जैसे आपके वो पेज लगे होते हैं ना, वो 10 साल हो गए, 20 साल एक पेज है, उसको जंगार लग जाता है, रस्ट, तो उसको रस्ट जंगार को वो ख़त्म करने के लिए उसके कुछ लगाते हैं तो वो खुल, ज़ुबान को जो है एक तरह का एक रस्ट लग गया है, उसने कभी बोली नहीं इंग्लिश, आज तक नहीं बोली, बस मतलब हेलो हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम, हाउ आर यू, बस यही इंग्लिश बोल रही है इतनी, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ये वाली इंग्लिश बोल रही है, 8 10 15 फिक्रों वाली, पूरी गपशप नहीं की ज़ुबान में। इसलिए ज़ुबान का फ्लो खोलने के लिए, रवानी पैदा करने के लिए हमें इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा। उसको स्टार्टर, ये बहुत खूबसूरत स्टार्टर है, ये बड़ा अच्छा स्टार्ट हो सकता है आपकी ज़ुबान का फ्लो बनाने के लिए। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, चाहे आपको इंग्लिश आती है, आपको ये तो मुझे आता है दिस दैट दीज दोज, ये तो मैं आते हैं, मैं इंग्लिश जानता हूँ, तो फिर भी आप बोलेंगे, फिर भी, क्योंकि आपने अगर अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा लाइफ में इंग्लिश नहीं बोली हुई ना, तो आपकी ज़ुबान में बिल्कुल यकीनन वो एक गिरा लगी हुई है, ताला लगा हुआ है, एक जंगार लगा हुआ है, कुछ रस्ट है, कुछ है, रुकावट लगी हुई है, उस ताले को तोड़ना है, उस रुकावट को तोड़ने के लिए ये एक तोड़ है बहुत बेहतरीन, ये आपको लैंग्वेज में फ़्लो पैदा कर देगा। आप इसको जितना ज़्यादा आप बोलेंगे, आप 3 दिन की बजाय हफ्ता बोलें बेशक, और ये ना कि ये तो मुझे आ गया, ये तो पता लग गया, ये टारगेट नहीं है, ये आ गया, ये मुझे पता लग गया, ये तो मैं जानता हूँ, ये मैं बोल सकता हूँ। मिशन कुछ और भी है बैकग्राउंड में जो आपको समझ आएगा जब आप काम करेंगे उस पर प्रैक्टिस। जितने दिन इसको आप बोल सकें पहले घर में, फिर अगर आप बाहर कहीं जाएं तो फिर बाहर जाके जो चीज़ें नज़र आएंगी, दिस इज दैट इज, दीज आर दोज आर, दिस इज दैट इज, ऐसे जो जो नज़र आता जाए, कहीं दरख्त नज़र आएंगे, कहीं गाड़ियाँ, कहीं लोग, कहीं कुछ, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे बाहर खड़े आपको नज़र आ रहा है, oh that's a man and these are trees and that's a flower and that's a bus and those are cars, तो those are, और देखिए इशारे सही हो रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज अपोजिट तो नहीं चल रही, कि आप those सही कह रहे हैं, कि these तो नहीं मुंह से नहीं कर रहा, those की जगह कहीं आप कह रहे हैं these are, ओ है वो those, इशारा those का है। तो इशारा, जिस्म का कनेक्शन, दिमाग, जिस्म, जुबान, ये 3 चीज़ों के जोड़ लगने हैं असल में। ये बड़ी एक साइकोलॉजिकल भी है और ये फिज़िकल भी है, ये जो है ये इल्मी भी है, एजुकेशनल भी है। इस एक्टिविटी के अंदर बहुत से फ़ायदे छुपे हुए हैं जो आपको शायद ये जहरी आंखें नहीं देख सकती, समझ नहीं आएगी कैसे है। तो हर शख्स, मैं ये मशवरा दूंगा हर लैंग्वेज स्टूडेंट
इंग्लिश लैंग्वेज का जो शौक़ रखता है, चाहता है, जो उसकी ज़रूरत है इंग्लिश, वो इस एक्टिविटी से अपने 1000-2000 फ़िक्रे ज़ुबान से निकाल के बाहर फेंक दे। और जब वो निकाल कर बाहर फेंक देगा तो उसके फ़्लो ज़ुबान में बन जाएगा। जैसे इंसान कोई बहुत ज़्यादा आप 8-10 कप चाय पी ले तो मुंह में क्या हो जाएगा, चाय चाय का जायका होगा, फिर दिल करेगा हाय कोई चटपटे दिन बने ना खा ले। फिर कोई चाट मांगेगा आपका मुंह, क्यों, अब चाय चाय का टेस्ट हो गया। या कोई भी चीज़ आप खाएं वो मुंह में ज़्यादा तो ज़ुबान में फिर वही टेस्ट आ जाता है। अगर जब आप इंग्लिश बोलेंगे ना ये वाली, तो थोड़ी देर 10-15 मिनट बाद इंग्लिश बोलने के बाद ज़ुबान को ऐसे लगे जैसे इंग्लिश ओए होए मुझे इतनी इंग्लिश आती है, मुंह में इंग्लिश भर जाएगी, ज़ुबान इंग्लिश वाला टेस्ट हो जाएगा। तो ये लैंग्वेज की प्रैक्टिस करने के लिए ये एक्टिविटी ज़रूरी है। सभी लोग इसकी चाहे वो एलिमेंट्री स्टूडेंट है, एडवांस है, इंटरमीडिएट लेवल स्टूडेंट्स, this practice is very important. It has multiple benefits. It will give you a lot of flow in your language. Your tongue will be very fluent. Because you have not spoken English in your life, you just want to start speaking now. You need a fluency in your language. That's the best way to start speaking language. You will develop your physical expressions, your mental harmony with your expressions. You will learn multiple things, many things through this activity. Believe me, you do this every day. Either you are intermediate student, or you're elementary, or you are advanced even level students. If you don't have a fluency in your language, that's the best way to be fluent. With this activity started, and then we will have number of other activities which you will do at your home, outside your home. You will speak a lot of English and you will feel very fluent in your English language, right? So let's start the practice now, right? Hi guys, now is the time to practice. What I want to show you how we're going to put the things there on the table, something near, something far. So we want to practice these 4 words now. Remember these words: this, that, these, and those. Hi, hello, assalamu alaikum. Now it's a time to practice in English, and I have put a lot of things on the table, and these are all different things from my house. Same way you can collect some things, put the things somewhere in your house, like on a desk, on a table, any place in your house. And like this, some things, one thing near you, and two or 3-4 things more, near you, and that is, after this small wall barrier, you see, I have put one things. I want to use 4 words, so 4 lines you see here. 1, 2, 3, 4. What is this line for? This is for this. This is one thing. This is. And second line, 2 or 3 or 4 things you can put. What is the word for second line? These. These are. So this is. These are. And third line, third row, I have put one things. So I will say, what is the word? That is. So that's, I will say that's for speaking. And the last line 4, I have two things or 3, 4 you can put. More than one in a word I speak. Those are. I'll say those are. Not like those are. I want to
be fluent and want to be expert, so I must say those are, like this. So you can see, I believe you can see these things. If you can't see exactly what is this, don't worry. You can practice in your house, but in the house, you can see the things. Right? Let's start speaking English. When you speak English, you practice, you try to speak the way you are talking, your intonation, your up and down, your rise, pitch level is like you are really talking. Sometimes maybe you're happy, sometimes you are surprised, whatever. So let's start speaking English. You must know the names of these things. That's the first important things. When you select things, you know what is this in English. What is the this word in English language? How do we say that in English? You must know everything you should know in English. Then you can speak easily. Right? I start from the first line saying, "Hey, excuse me. This is a bucket. This is a bucket, and this is an air freshener, and this is coffee box, a bottle of coffee, and this is a hair trimmer, a trim for shape, hair trimmer, and this is toothpaste. This is a salt pot, and this is a headphone. This is a mortar and pestle. This is, pestle or mortar. One is mortar, one is pestle. This is pestle. Mortar, pestle. This name is mortar, pestle. Check the spelling. Maybe I write the comment spelling. Pestle, silent, pestle. So this is a glass, and this is a duster, and this is a container or a box, food box, a food container. So see, now I'm speaking English. I don't know a lot of English, but I'm speaking English. This is English. And see, now I want to, when you speak it first time, maybe you speak it slowly like this, but second time when you say it, speak faster. More fluently try it. Say, hey, this is a bucket, this is an air freshener, this is a coffee, this is a hair trimmer, this is toothpaste, this is a salt pot, this is headphone, and this is a mortar and pestle, and this is a glass, and this is a duster, and this is a container. See? How do you feel? When you speak English like this in your house, you will feel very happy. You will feel, I can talk in English. You will be like surprised. I can talk. You're not speaking heavy vocabulary, difficult words. You're speaking about very simple things, but your mind will be very happy. I can talk. I can speak. This is the first time in your life you have started talking. Before that, you never spoke English. Your mouth is not trained. Your mouth hasn't got practice. Your mouth is not used to speaking English. So this is the first time, the first activity, the first lesson of speaking language, and you feel after this lesson, I can talk. My English is good. I can speak English. You will feel like that. So continue, please. So for this second line, we use the word these. Like these are markers, these are cups, and these are books. And these are tablets, pills or tablets. Pills is generally American English pills that we eat, tablets, medicine. Well, these are some tablets or pills. So when you say it slowly, second time, try to speak like you are really talking with somebody. Say, hey, hello, these are markers, these are cups, and these are books, and these are tablets. See, my tone, my way of talking, same way you will try in your house.
And third line, one thing is there, singular things we use because I assume they are far, they are not near, not close to me. So I will use the word that. I will say that is. I will say like that's like that is. Well, that's a bow, first one, and that's a perfume or aftershave or whatever. That's a perfume. That's a pair of scissors. Pair of scissors. We say pair of scissors. We don't say just that scissor. You can say, but formal English, that's a pair of scissors. And that's a dish. A dish is like a small container. You can say dish. Just a dish, container, dish. That's a dish, white one. And that's a knife. Dangerous, don't use it. That's a knife, and that's a comb, like comb brush. Yeah, comb is C-O-M-B, but B is silent. Comb, we say comb. That's a comb, and that's a lipstick. That's only for women. Don't worry, it's not for Mr. Sheikh Chaudhary, or this is for the women. So that's a lipstick. And that's a brush, toothbrush, that's a toothbrush, and that's a cup, and that's a bar of a soap. Bar of what? Do I say bar? Formal English is a bar of a soap. If you want to say two soaps, formal English is better to say two bars of soap. Don't say two soaps. But in spoken language, in colloquial kind of English, you can say informal way, two soaps, I need 5 soaps. It is acceptable in speaking world. But anyway, formal English is a bar. That's a bar of a soap. And now the fourth line, I should say, what is the word for more? Those. So I'll say those are. I will not say those are. Both correct, but for speaking, for fluency, it's better to say those are. So I say those are dishes. Those are dishes. Those are bottles. Those are remote controls. Those are spoons. Those are 2 black spoons. You want to speak some extra words? Don't do it first time, do it like second, third time. You can use extra words. You can say numbers, for example, 2 spoons. You can use the colors word in your English. You can say those are 2 black spoons. This way you're speaking more English. More English, more words is better for your tongue, for your practice. But you can, do this activity. First time you speak simple sentences with limited words. Second time you try to speak fluently, faster, more, quicker. Try to speak quicker, faster. And the third time, fourth attempt, fifth time, try to add words, colors, numbers, small, big, these kind of words, adjectives. This way your sentences have more words, and you will feel very confident, you will enjoy it. It's enjoyable activities, a lot of fun there. See, I'm really excited to speak like this because this is my first lesson. I feel, I can talk in English. I can speak so many things in English. So you will feel like that. So once you say it like this slowly, try second time. Start from the first thing, finish up to the last thing. Don't stop. Don't have breaks. Don't make pauses. Continue like you are talking with somebody. Speak this style, this way. Start like this, from the first thing up to the last thing.
this is the way you continue it. So now you understand the activity. This activity plays things, put things on the table, and then you can start talking. The more you speak, the better you will feel. The more you talk, more fluent you will feel in language. So this is the first lesson, the best lesson to start talking any foreign language. If you're learning Norwegian, you're learning Danish, you're learning Spanish, you're learning French, any language of the world, you want to start speaking this language, this is the first lesson. Put the things and talk, describe them. What are these things? Where are they? This is, that is, these are, those are. So this is you can repeat this activity as many times as you want. Your repetition, saying again and again, will be very beneficial, very good for your tongue, for your practice. So I hope you enjoy this activity. Now I want to see you doing this activity. Right? So this was a lesson just in English. Let me talk in a few sentences in other language, because I finished speaking English. Everybody is sure how to practice, how to talk. Now, just to help to make happy my viewers, my audience, Mr. Sheikh, Chaudhary, and Abbasi, and Khan Sahab, everyone, थोड़ा सा मैं आपको उर्दू में देखो आइडिया दे देता हूँ. अब आपने ऐसी एक्टिविटी घर में करनी है, ऐसी चीज़ें रख के इंग्लिश बोलनी है, देखना है आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, कैसे अड़ रहे हैं, कहाँ पे क्या मुश्किल आ रही है. और फ्लुएंसी के लिए सबसे पहला कदम यही है कि दुनिया की कोई ज़ुबान आपको सीखने का शौक़ है. चाइनीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं तो चाइनीज़ में भी चीज़ों के नाम आते हों जो आपने रखनी है या याद करने. नाउन्स इन्हें कहते हैं ग्रामर में. नाउन्स आप याद करें ज़्यादा से ज़्यादा, फिर हमें वर्ब्स की भी ज़रूरत पड़ेगी और तरह के लफ्ज़ों. ये नाउन्स है, सारी चीज़ें नाउन्स होते हैं, चीज़ें, सब चीज़ें जो आपको इंग्लिश में आ जाए. तो घर की चीज़ें, घर के कमरों में कुछ चीज़ें इकट्ठी करें, एक कमरे में रख के इस तरह ज़रा गपशप तो लगाएं, ज़रा देखें क्या होता है, प्रैक्टिस करके देखें. कोई मुश्किल हो तो मुझे कमेंट्स करें, व्हाट्सअप कर दें, ईमेल कर दें, टेलीफोन कर दें, जो भी करना हो. लेकिन ये सारा काम देखें बगैर किसी ब्रिटिश काउंसिल, अमेरिकन सेंटर और इधर लैंग्वेज इंस्टीट्यूट और फलां लाइब्रेरी, फलां कॉलेज, फलां यूनिवर्सिटी, फलां डिग्री, फलां पीएचडी, फलां मास्टर्स इन इंग्लिश करने के बगैर इंग्लिश आ जाएगी. ये वो टेक्निक्स हैं, वो तरीके हैं जो आजमाए हुए हैं सालों से, और ये इस तरह आपकी लैंग्वेज में फ्लुएंसी पैदा कर देंगे. आप मेरी तमाम वीडियो देखें, दूसरी भी आपको ज़रा बैकग्राउंड समझ आ जाए लैंग्वेज लर्निंग का. हेजिटेशन क्या है, कैसे रिमूव होगी, कॉन्फिडेंस कैसे, सवाल कैसे पूछे, तमाम टॉपिक्स पे वीडियोस बन रही हैं, बन चुकी हैं, बनती जाएंगी. सैकड़ों में आप ज़रा सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको टाइम पर वीडियो मिले और आप टाइम पर देखें. आपका वीडियो का लिंक्स कनेक्शन होना चाहिए कि ये ना एक आपने देखी फिर आपको बात ही समझ नहीं आई कि वो पहली क्या बातें की थी. तो ज़रा मेरे साथ हर वीडियो आप देखेंगे और देखते चले जाएंगे तो आपको पूरे लैंग्वेज का बैकग्राउंड समझ आएगा, टेक्निक समझ आएगी और सारे तरीके समझ आएंगे. और मैं आपके साथ आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, बोल के दिखाऊंगा. पहले चीज़ें को समझ लें. समझाने के लिए मैं आपसे उर्दू, पंजाबी, सराइकी में जो मुझे आती है बात वो समझा देता हूँ. जब आपको समझ आ जाती है तो उसके बाद फिर मैं कहता हूँ भाई अब समझ आ गई, अब याद कर लें, थोड़ा सा याद कर लें. जब आप याद कर लेंगे फिर मैं कहूँगा come on now, okay now you know English, let's start talking. फिर हम बातें शुरू कर देंगे. फिर और ज़ुबानें ना सोचें, ना बोलें, ना सोचें, और फिर बस सिर्फ इंग्लिश चलेगी. अगर आपने प्रैक्टिस के दौरान और ज़ुबान बोली ना, पश्तो, फारसी, जर्मन, इटालियन, तो जुर्माना लगेगा आपके. वो जुर्माना लग जाएगा और वो आपको देना पड़ेगा. तो लिहाजा आपने जुर्माना नहीं लगवाना, तो आपने सिर्फ इंग्लिश बोलनी. जब आपको समझ आ गई, मैंने आपको समझा दिया, सिखा दिया, आपने वो याद भी कर लिया, अब तो प्रैक्टिस की बारी है. प्रैक्टिस करते वक्त और ज़ुबानें नहीं बोलनी, फिर सिर्फ इंग्लिश चलेगी. चाहे गलतियाँ हो, चाहे अड़े, चाहे जो मर्जी हो. ये वो लेसन है जो एक बुनियादी इंसान इंग्लिश स्टार्ट करना चाह रहा है, शुरू करना चाह रहा है. और जिसको इंग्लिश आती है
وہ بھی اگر نہیں بولتا, ہیزیٹیشن ہے, فلوئنسی نہیں ہے, کانفیڈنس نہیں ہے, وہ بھی یہ کام کرے. یہ دوائی ہے بڑی ضروری, یہ ایسا اینٹی بایوٹک ہے, ایسا انجیکشن ہے جو کرونا کو بھی مار دے گا. تو یہ آپ کھا کے دیکھیں, انگلش ضرور آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. I'll see you in the next video. Take good care of yourself. Don't forget to subscribe and tell your friends and family to subscribe this channel and watch all the videos so that they can also learn English for free at home. Bye bye.